and what are its biggest advantages and challenges? Thank you so much. Awaz clear? Okay. The first question is obviously it's a very open question. That, how AI is being used in academics or academic writing as well. So I am always an opportunistic and I see the opportunity rather than highlighting challenges a lot because AI gives us the opportunity. So how we can improve our academic writing. But I just want to share some experiences with you. Okay, still she believes that my voice is not reaching out. It is the case? आवाज नहीं आ रही क्या? मैं और माइक का इसके आवाज फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा. अच्छा मैं ऊंचा बोल लेता हूँ, आपको आवाज आ जाएगी. Okay, so I just want to share one experience with you. A lot of people ask about using AI in academic writing. But first of all, let me know how many of you have really get training or teaching in academic writing while you are studying. कितने लोग हैं जिनको academic writing सिखाई जाती है? Leave AI aside. Let me know first. There is, I think most of us says that no, we are talking about AI. Even if there is no AI, we are not being taught. So I just want to share one experience with you, then you can understand that when first time I was employed in a university, that was Hamdard University, and at that time I was thinking, बड़ा काम हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ. Okay. By the way, my father was also a professor, and he's very well-known professor in the academician in the field of plant anatomy. और मैं सिर्फ उनकी कामयाबी का सिर्फ एक वजह बता दूँ, शायद आपको अंदाजा हो जाएगा. His first paper was published in Nature, single author, so you can understand. His work is cited in the Bible of plant anatomy. So what happened to me? Remember, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ. I wrote a research paper for the first time. Okay, and I was feeling like this. I did something. I have written a research paper. I just asked my father, Abuji, please, I have written this research paper, and please see this. If you believe that there are some corrections, let me know. मैं ये समझ रहा था कि मैंने बड़ा काम कर लिया. My father asked, okay, leave this. I will see and let you know. After a few days, he asked me, Nadeem, I have seen your paper. There are a few things which you need to understand. He just said slightly. There are a few things you need to understand, and you should know how to write research papers. First of all, see the paper. उन्होंने कुछ नहीं कहा. जब पेपर मेरे हाथ में दे दिया, जब मैं पेपर लेके निकला, so my original writing was not there. All paper was, like in red pen. Okay, corrections. And I just saw that paper and I said, oh, what happened to my paper? मैंने जो लिखा था वो किधर गया? So I asked my father then later on that how you find out all these things. He said you should know how to write it, how to start, how to build your argument, how to cite somebody else's work, how you compare things, how you draw conclusions. वो कहने लगे तुम तो बादशाह हो, तुम तो कंक्लूजन ऐसे निकाल रहे हो जैसे तुमने सब कुछ देख लिया, तुम तो ऐसे लिख रहे हो जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स. So this is something which I realized at that time that I am at zero. Means I have no idea about academic writing, and that is one problem we are facing in universities. We are not being taught what academic writing is all about. So obviously, if you are not teaching students the academic writing, and you are just enrolling a student for research, and they don't know how to write, so obviously they will take help. Sorry to say, if we will not provide them help, they will take help, and for that purpose they will use tools. And if they start using tools, obviously they will learn something as well. So मैं तो फिर भी opportunity लेता हूँ भाई, सीखने को मिल तो रहा है. So if I write something, and I write something for corrections, I write something for improvement, if I write something to see कि यार इसका alternatives क्या हो सकता था, what vocabulary we can introduce
because English is not our native language. मसला तो हमारा ये हम लैंग्वेजेस में ही फंसे हुए हैं. हमारी लैंग्वेज कौन सी है? 6-8 लैंग्वेजेस है. बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले माँ की लैंग्वेज सुननी पड़ती है, फिर उसको कहते हैं तुम अरबी पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि तुम्हें कुरान पढ़ना है, फिर तुमने जो है ना इंग्लिश सीखनी है, उसके बगैर तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं होगी, फिर पता नहीं और कौन कौन सी लैंग्वेज उसकी जिंदगी में आ जाती है पहले 10 सालों के अंदर ही. ठीक है, ऑब्वियसली. सो इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज. पीपल हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन. ये फैक्ट है या नहीं है? दिस इज अ फैक्ट. आप माने या ना माने, दिस इज अ फैक्ट. सो इफ AI tools help us in this regard, then it is very useful for us. But another important thing is, then the teachers or the supervisors should understand how they can, how the students can use those tools as well. तो उन्हें भी सिखाना पड़ेगा ना कि यार ये टूल्स कैसे हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, मैंने कैसे इस्तेमाल करने हैं, स्टूडेंट अगर यूज कर रहा है वो कैसे यूज कर सकता है. सो एकेडमिक राइटिंग इंप्रूव हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस वजह से कि इन टूल्स की मदद से लोगों ने सीखना शुरू किया. दे हैव, देखें कोई लोग कॉपी नहीं कर सकते. मैं AI में बैठ के अपना रिसर्च पेपर नहीं लिख सकता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता. और ऐसा रिसर्च पेपर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. अगर मैं किसी प्रॉपर जगह पे सबमिशन पर जाऊँ तो ऐसी एकेडमिक राइटिंग को प्रॉब्लम है. आखिरी बात कह दूं एकेडमिक राइटिंग में एक और चीज, इफ वी गिव असाइनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स, लास्ट थिंग, normally we see okay, people have students have just taken these answers from the ChatGPT prompt. ऐसा ही है ना, हम सब यही करते हैं, फायदा नहीं है असाइनमेंट देने का. तो भाई चेंज योर असेसमेंट स्ट्रेटजी ना. why you are not changing your assessment strategy? why you are just stick to the same strategy which you have? So if that is changing, it means you have to change your strategy as well. come out with different things. मैं असाइनमेंट देता हूँ वही क्लास में, मैं आपको बता रहा हूँ करता क्या हूँ. when they come into the class, I just pick 6 random students and I ask them different questions just to validate whatever you have written. Assignment देता हूँ, उनसे कहता हूँ write your own words, write your own reply. If your reply is even worst, I will give you full marks. Don't worry about marks, you will get full marks. Okay, but you will be able to explain what you have written. जो लिखा है वो बता दो. तुम सिर्फ ये बता दो तुमने क्या लिखा, तुम मुझे बता सकते हो या नहीं बता सकते हो. That is important for me. So ये मेरा एक व्यू पॉइंट है. AI is a tool. We are using AI to assist in your idea. अगर आपके पास कोई idea है, but you don't know how to write that idea, तो जैसा भी जाए, I think everybody know about the ChatGPT. Mostly लोगों ने यूज किया होगा. Please raise your hands. इसलिए कि लास्ट टाइम एक वर्कशॉप में काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने ChatGPT यूज नहीं किया. I was very surprised कि क्यों नहीं यूज किया. So what is the actual this ChatGPT is meant for? It is meant for to generate ideas. If you have an idea, just put it. वो आपको एक अच्छे तरीके से आपको लिख कर दें. But you don't copy. By getting that idea, you build up your proposal, your concept, your research paper. ठीक है, इसलिए कि अगर इसको आप एक रिसर्च पेपर में बना देंगे, लेकिन उसमें इतनी बाइस होगा, इसमें रिसर्च हेलुसिनेशन के रिस्क होंगे, इतने एरर्स होंगे that you don't know. वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होंगे और आप सीधे वाली पे ज़बरदस्त रेफरेंसेस भी दे दिए और सब कुछ दे दिए. But actually, those references are not existing. So you need validation. AI को आप as a assistant use करें. इसके different है, जैसे Grammarly है. जैसे डॉक्टर साहब said English is not our native language. We are doing mistakes because we are not used to speak in English every day. जब से हम डॉक्टर बने मुझे तो लगता मैं भी भूल चुका हूँ. All the time I am speaking with different language people. हमारी वो फ्लुएंसी खत्म हो चुकी है. इसी तरह से राइटिंग स्टडी राइटिंग इज टोटली डिफरेंट. हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते. हमें वो बताना पड़ेगा कि हमने किसने कहा है, हम किसके रेफरेंस को देना पड़ेगा. एंड डोंट कोट. यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ दैट पैराग्राफ यू हैव टेकन फ्रॉम एनी आर्टिकल. हम जैसा एज इट इज नहीं लिख सकते, वो आ जाएगा प्लेजरिज्म. इवन AI, अगर AI का लिखा हुआ एकेडमिक आर्टिकल आप पब्लिश
AI and pressurized. So you have to change in your own language. और ग्रामर का भी बहुत अच्छा तो डिफरेंट साइज ग्रामरली चैट जीपीटी एलिसेट चैट बॉक्स चैट पीडीएफ बहुत सारी चीज़ें कुछ तो ऐसे भी है जो बुक्स में से आपको एमसीक्यूज भी रेडी करके देते हैं तो इजी कर लिया उन्होंने हमारा काम बहुत इजी है बट वी स्टिल लीव वैलिडेट उसको करेक्शन ये नहीं कि हमने एज इट इज कर लिया यू हैव टू वैलिडेट वो रिलायबल है कि नहीं कि उसका जो टेक्स्ट है वो रिलायबल है कि नहीं अगर एमसीक्यूज बनाए हैं उसके जो डिस्ट्रक्टर्स ऑप्शंस वो रिलायबल हैं करेक्ट हैं कि सो यू नीड रिलायबिलिटी वैलिडिटी although I am not AI specialist and my subject is radiology so I'm not expert but I know that much कि हमें अपने आप को भी चेंज करना होगा because the advancement in the technology so we have to learn about the advancement हम पीछे नहीं रह सकते so आगे academic research की बात हो रही है but I want to use AI in radiology उसके ऊपर बात करते हैं Thank you so much, Professor Dr. Nasreen. Please clap for her. Okay, time for the next question, which I'm going to ask from Dr. Saila Said Khan. So the second question is, can AI truly enhance human intelligence or does it risk diminishing critical thinking and creativity in research? Well, this question पे मैं ये कहूँगी कि of course AI is a tool which we all are using nowadays and particularly in academic writing. So it can enhance the human intelligence in the manner कि आपका research time बच जाता है because using the AI it can give you a chance कि आपको बहुत सारी चीज़ों की summary एक बहुत short paragraph में मिल जाती है which can give you a basic idea. But this is the human intelligence जो उस basic idea को किस तरह से narrate करे या किस तरह से convert करे into the thing which you need. ठीक है जो आपको research output जो आपको चाहिए या जो आप literature citation करना चाह रहे हैं अब आप उस idea को कैसे करें. But before using this tool students को इतनी knowledge होनी चाहिए कि आप उसको बेहतर तरीके से कैसे यूज़ करें. As it is जिस तरह मैडम ने कहा कि copy paste नहीं करना है आपको. You can just take an idea from that and you can utilize that idea by your critical thinking. जिस तरह से मैंने कहा कि क्या critical thinking diminish हो रही है, so yes, आजकल के जो students AI को use कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ChatGPT से आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस आंसर को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, अपना जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिहाज से उसको कैसे मॉड्यूलेट करना है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है. तो ChatGPT जहाँ आपको आसानी दी है वहाँ पे उसके साथ ये प्रॉब्लम आ गई कि अब स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं. एक साइंटिस्ट या रिसर्चर का ये काम है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे और अपनी खुद से मेथडोलॉजी डेवलप करें, एक्सप्लोर करें. तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि स्टूडेंट को एक आंसर मिल जाता है, उस आंसर को लेकर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता है. लेकिन हम जैसे रिसर्चर थे, जब हमारे ज़माने में ChatGPT था तो हम लिटरेचर रिव्यू करते थे, फिर हम सोचते थे, फिर हम एक आइडिया डेवलप करते थे कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, फिर मेथडोलॉजी डेवलप करते थे कि इसको कैसे करेंगे. अभी भी AI is a very effective tool but it cannot generate methodology for you. It cannot generate interpretation of your results. आप अगर अपने रिजल्ट डालेंगे भी तो डिस्कशन जो पेपर का काम है वो आप ही का लिखना काम है और उसके लिए you have to go through the literature review. Citation वो देगा but maybe that citation is wrong. So as जहाँ पर उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है. खसूसन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोगों ने चूँकि हम वो जनरेशन है जनरेशन वाई जिसकी दोनों चीज़ें देखी हैं, यानी कि कंप्यूटर्स का इनिशियल दौर भी और अब का है कि बहुत आगे दौर आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ यूज़ हो गया है. तो आई थिंक कि क्रिटिकल थिंकिंग को इसने डिमिनिश किया है और हमें अपने स्टूडेंट्स को ये लर्निंग देनी होगी कि हाउ दे कैन इफेक्टिवली यूज़ AI rather than just using it. Thank you so much, Dr. Saila Said Khan. Please clap for her. Okay, so time for the third question, and the third question I would like to ask from Dr. Naveed Patel. And the question is, what role should AI play in assisting researchers and students, and where should we draw ethical boundaries? Okay. So, using AI, we can write a paper
in a few minutes. We can even generate citations, regardless of the fact that in those citations the authors may not exist, the paper may not exist, the journal may not exist. But when you submit it to a good publication outlet, reviewers will still take 6 months to respond. So, the generalizability, the generic nature of the answers from these AI tools is problematic, and using any tool, it is important to understand what are the drawbacks of that technology. Just a few minutes ago, I had talked about the non-deterministic nature. Now, that non-deterministic nature was in opposition to the standard answers that Google used to give. Right? So every answer has to be unique, but that is problematic because the structure of the answer still remains the same. In terms of ethical boundaries, I believe that there is no harm in refinement of the idea. If you have an idea and you have a writer's block, you're not able to get started, whatever you have, you put in the keywords and it'll give you a starting point. But from that starting point on, you need to take the charge. You cannot let AI be in the driving seat for research publications. You have to be the driver. So, making sure that your writing is your writing, it is critical. In healthcare, when we find solution, when we are even developing treatment plans, we have to consider the patient's condition. The problem is we are not taught. We are taught from 70 kg male perspective, Caucasian male perspective, all the diseases. But the problem is 50% of the population is not accounted for to begin with, and the remaining 50%, it's only a very small percentage of people that are covered in any medical books. So what do we have to do? It's like we have a lock, and that has a lot of keys. We have a huge set of keys, and we have to use every single key. ये दवाई चलेगी, ये दवाई चलेगी. अच्छा, 2 हफ्ते के लिए use कर देंगे. Okay, increase dose, change medicine. We experiment with these things. AI gives us this ability to 3D print a key. ठीक है, आपको अगर पता चल जाएगा क्या, तो की को प्रिंट करना है, तो 3D एक ही की प्रिंट करेंगे और it should work for that. Same thing in research, that we can use AI to expedite that process, but ultimately we have to be in the driving seat, and that the usage should also. So I started that as a joke. Journals still take 6 months to respond. Actually, they are also using it, and when they use it for the review process, it is very obvious that the review, because the reviews are so generic. Just the other day, one of my colleagues here, he wrote a document, so I uploaded that document in GPT and asked him to write a review. And I asked him to write a critical review. So he wrote me back that, even if I had given it an A+ paper from his class, ChatGPT would have failed it. And I said, yes, it would have failed it, but even if you had given it nonsense keywords, it would have turned it into a masterpiece. So understanding those limitations, where is the boundary, where it begins, where it ends, that is critical. Thank you. Thank you so much, Dr. Nabil. I would like to pause the panel session for just a few minutes to present a token of appreciation to Dr. Sobia Aftab.